बताता हूँ आपको। ये आज है तारीख 4 मई 2022, समय हो गया 09:01 AM। आज रिजर्व बैंक ने जो है क्या कहते हैं जो रेपो रेट जो बढ़ाई है, ठीक है। बेसिकली हम उसको सिंपल समझते हैं कि ऐसा होने से जो है लोन्स महंगे हो जाते हैं। इसको ये सीधा जो है आम आम जनता से कनेक्टेड नहीं होता है। पहली बात तो आप ये समझ लो। दूसरा, इसमें एक रेशो आ रहा है, नंबर आ रहा है 4.40। आप पॉइंट को अगर भूल जाओगे ना तो 440 वोल्ट का झटका दिया है रिजर्व बैंक ने। 440 वोल्ट का झटका दिया है, वोल्ट या वॉट जो भी कह लो, एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री। रिजर्व बैंक का रिलेशन सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री से है और बहुत बड़े क्या कहते हैं मनी लैंडर्स से होता है, वो भी बड़े रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए आपका टाटा ग्रुप है और टाटा ग्रुप ने जो है क्या कहते हैं एक्सिस बैंक के थ्रू जो है कोई लोन ले रखा है। अब वो लोन रिटर्न नहीं कर रहे और लोन मान लीजिए क्या कहते हैं है कोई 2.5-3 लाख करोड़ के लगभग का, 3 लाख करोड़ का लोन है, एक्सिस बैंक के थ्रू टाटा ने ले लिया उदाहरण के तौर पे, टाटा ग्रुप ने। अब वो पैसा वापस नहीं जा रहा। अब रिजर्व बैंक को अपना पैसा तो वापस चाहिए, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा कि क्या कहते हैं रेपो रेट बढ़ा देगा। तो अपना पैसा जो है ना जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए ब्याज बढ़ाएगा, सो दैट वो उस समय तक एटलीस्ट, अगर सपोज मान लो 20% बहुत मायने रखता है, 2.5%, 4%, इस बार 4% बढ़ाया ना उन्होंने, 4% बहुत मायने रखता है। वरना रिजर्व बैंक 1%, 2%, 2.5% तक जाता था। 4% जानते हो कितना मायने रखता है? मतलब अभी 2.5% बढ़ा था कुछ दिन पहले, फिर 4% बढ़ा, मतलब मान लो 10 रुपये पे आपका जो है 2.5 रुपये बढ़ गया, 12.5 रुपये हो गया। 12.5 पे जो है का 4% बढ़ा लो आप, ठीक है, 12 चौक 48, 4 रुपये 80 पैसे के लगभग हो गया। तो 12, 8, 3, 1, 6, 1, 7, 17 रुपये 30 पैसे के लगभग। तो एक्चुअली ये जो रेपो रेट होती क्या है, हम तो इसको सीधे तौर पे कैलकुलेट करते हैं रेपुटेशन। जब रिजर्व बैंक बहुत गुस्से में होता है ना बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, क्योंकि रिजर्व बैंक का रिलेशन बैंकिंग से है, वो डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कभी नहीं करता, क्योंकि इट्स ए सेंट्रलाइज्ड बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू काम करता है, ठीक है। और रिजर्व बैंक के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अब उन्होंने रेपो रेट अगर बढ़ा दी ना वैसे 6.5%, तो अचानक वो 6.5% नीचे नहीं लाएंगे। आप जानते हो रेपो रेट कब बढ़ाई जाती है, लोन्स कब महंगे कर देते हैं रिजर्व बैंक में रेपो रेट बढ़ने का मतलब, बैंक अगर रिजर्व बैंक से लोन लेगा तो महंगा हो जाएगा, उसका EMI बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर रिजर्व बैंक किसी से लोन लेगा, ये रिवर्स रेपो होता है। उदाहरण के तौर पे जब मान लो अब एक्सिस बैंक को जो है क्या कहते हैं अपना पैसा कहाँ रखना है, वो एक्सिस में तो नहीं रखेगा, वो रिजर्व बैंक को देगा रखने के लिए। अब रिजर्व बैंक में एक्सिस बैंक का कुछ पैसा पड़ा है, तो उस हिसाब से जो है ना ये होगा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ना मतलब रिजर्व बैंक अपनी रेपुटेशन बढ़ा रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है। अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है कि जब एक्सिस बैंक का जो प्रॉफिट मनी है और वो अगर रिजर्व बैंक में रखा हुआ है तो उसका ब्याज जो है रिजर्व बैंक को एक्सिस बैंक को देना होगा, ये रिवर्स रेपो होती है। ऐसे में क्या होता है, रिवर्स रेपो कब आती है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बाजार से पैसा उठाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी देश से लेके आए, बैंकिंग सेक्टर आएगा, बैंकिंग सेक्टर से ही पैसा, डायरेक्ट मार्केट से रिजर्व बैंक पैसा नहीं उठाता है, ठीक है। डायरेक्ट मार्केट मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं किसी लाला बनिया से उठा लिया पैसा, बहुत सेंट्रलाइज्ड सेक्टर होते हैं, वहाँ से आता है पैसा। अब
भारत के अंदर क्या हुआ है, जब अगर अगर ये रेपुटेशन दिखा रहा है ना अपनी, इसका मतलब समझिए आप, रिजर्व बैंक का पैसा फंस गया है मार्केट में। अब ये जल्दी से जल्दी अपना पैसा रिकवर करने के लिए ईएमआई में रिकवर कर लेगा ये। उदाहरण के तौर पर अगर ये 4% का हिसाब किताब लगा के चल रहे हैं, तो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा कि मेरा अगर इंडियन मार्केट के अंदर जो है, मान लो क्या कहते हैं 100 रुपये है फंसा हुआ है, 4% महीने के हिसाब से निकाल रहा हूँ, मतलब 4 रुपये के महीने के हिसाब से, तो कितने बार निकलेगा? 40, 10, 10, 20 और 4 दूनी 8, 22, मतलब 22.5, मतलब 22 महीने के अंदर रिजर्व बैंक अपना पैसा रिकवर कर देगा। मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये होता है सिंपल। अगर 4% कह रहा है, 100 रुपये में ही कैलकुलेट होगा कि मतलब 22 महीने के अंदर रिजर्व बैंक जो है इंडियन मार्केट से अपना पैसा रिकवर कर लेगा। रिजर्व बैंक का रेपो रेट बढ़ाना 1% भी, जानते हो कितना बड़ा अमाउंट हो गया। अब इंडियन बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंकों की आवाजाही और इनकी मनमानी और इनके द्वारा रिजर्व बैंक का पैसा ना दिया जाना, इंडियन आर्मी का काम क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम। रिजर्व बैंक की रक्षा करना है, और क्या है? मालूम है आपको ये बात? नहीं मालूम। थोड़ी काम होता है। और आर्मी किस लिए बनती है? नेताओं की सिक्योरिटी के लिए। किसने कह दिया आपको? पुलिस किस लिए है? पैसे की सिक्योरिटी के लिए होता है सारा खेल, और कुछ नहीं है। अब इन बैंकों से जो है क्या कहते हैं पैसा रिकवर करने का काम क्या? रिजर्व बैंक, सीआरपीएफ, यहाँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व आ गया ना यहाँ पे, तो सेंट्रल रिजर्व बैंक हो गया। तो सीआरपीएफ का काम है पैसा रिकवर करना। वो इन बैंकों से जाके पैसा लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, डिसाइड करता है कौन सी फोर्स कहाँ काम करेगी, बॉर्डर से कब कौन से देश से पैसा आएगा जाएगा, ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। नई आर्मी बनाना ये सब अलाउड ही नहीं है। जैसे मोदी ने आते ही जो है क्या कहते हैं के फोर्स बना दी, तभी तो मोदी की रेल बनाने पर उतर गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इन केस ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड इन मोनेटाइजेशन, रिजर्व बैंक में खुद बहुत बड़े बड़े लोग जो है फंसने वाले हैं। है तो ऑफिसर ही ना, भले गवर्नर ही क्यों हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जो है वो मालिकाना हक नहीं रखता, वो गवर्नर है सर। गवर्नर का मतलब गवर्निंग बॉडी है, वो जो गवर्न कर रहा है उसको चला रहा है, उसका भरण पोषण का ध्यान रखेगा, तो इसलिए उसकी रिस्पेक्ट है, पर ओनर नहीं है वो। लाइक ना शक्तिकांत दास is a Reserve Bank governor. Yes. So he's the whole sole governing body which is responsible to manage all wallets in India, whether it's of a private bank and whether it's of a centralized or from the central banks, because they are responsible to fulfill and always keep top up with the reserve. Reserve means gold reserve, I tell you, food reserve. Yeah, banking is never is a new set to you. Banking is only related to currency only. No. Petroleum reserve. This is the responsibility of Reserve Bank of India. Yes. No Prime Minister nor President. That's why the Reserve Bank of India's its chief's name is a governor. Responsibility of Reserve Bank of India to fulfill, to keep reserve of commodities like rice, atta, dal, chini, vegetables. They always keep their eye on the stock, what is in our reserve, and how much reserve in they can buy. Now, if any reserve, like in petroleum, is going down and price is getting high, it means the inside the sector of petroleum, somewhere Reserve Bank of India's money is stuck. So to keep out their money
इन वेरी स्पीड, मे बी पॉसिबल है 2.5 ईयर साइड कुछ लेके चलते हैं ये लोग, ऐसा इतने में पैसा रिकवर करना है. इन दैट केस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डू द प्राइस हाइक, recover the money and bought the reserve again, buy the reserve again. The responsibility of Reserve Bank of India to maintain India's reserve of each and everything, medicine, food, cloth, oxygens, amenities, petroleum, forces, weapons. Yeah, they're responsible and they can guide to anyone. The finance minister is nothing in front of him. Nothing. He is having the power just same as a Chief Justice of India. Equal. Like Chief Justice of India has to maintain the situation of law and order, and Reserve Bank of India's governor is having the responsibility to maintain every kind of reserve in India. Every kind of reserve. But if, because of their act, anything happens wrong, like in demonetization, as I reported to Reserve Bank of India, I'm in continuously in dialogue with Shaktikant Das and Raghuram Rajan and Urjit Patel. Because whatever you did, it's completely is written in the book according to the international principle to run the banks. Banks and reserve banks are the total different thing. Banks can hold money only they are just a counter to deliver it to public. But Reserve Bank of India is responsible to maintain every kind of reserve, every kind of, which is mandatory for our nation, which is a need of our nation. Myself, Hitesh Mandal, Twitter handle @HiteshRay1. You can see. And I'm holding the rank of a chakra in tricolor. I'm a chakra. You do call me Chakra Sahab. So understand the situation is running here in India. Reserve Bank of India will announce a draft of budget that these all things are with us in that much ratio. Now it's a duty of finance minister to tell to the parliament, because it's a political lobby. It's a politics. Politics is a game of cheating. Either they do show it in parliament in a right condition or not. It's up to them. Because if they do present wrong data, they will not get elected again. If they don't do act according to the Reserve Bank of India, because they वो भंडार समझते हैं, स्टोर वो है, वो देसी भाषा में समझो. Reserve Bank of India is like a reserve. Bhandar hai wo. It's a store. How much sugar is in a store here? But it is only when they paid to them in stock, ready to use. Not what is inside the factory was manufactured or produced.
they do keep the data like in currency, how much currency reserve is they have, because they continuously will they issue it to the market to spend by the public. They do take the money outside of India. They do take the money to any company, and the company will travel to the. This is the only way. Otherwise, the currency will always be in rotation inside the boundary of the nation. The only way by the taking out the money from the nation is because of for the trade only. But one subject is which is a criminal act. They do take the money without the right channel. They use terrorist route, money laundering. Now the Reserve Bank of India will keep the eye on how much money is laundered by these all criminals. Now they have to print it again. They have to issue the value of gold also. Only Reserve Bank of India and World Bank is responsible to pay your money's worth gold. That's no other bank. Or you can go to the market and buy the gold. That's it. But in exchange, only Reserve Bank of India and World Bank will tell you. None other bank. If you go there and you ask, please return my gold worth rupees of this currency, they will not. They will tell you, go to the Reserve Bank, or you can go to the market and buy the gold. The same, these all businessmen were in act of doing same. Now, since 20 days back, I'm still continuously in talk with Urjit Patel, Raghuram Rajan, and Shaktikant Das ji. They must have to tell the real result to me. Otherwise, the Reserve Bank will be going in a very, very, very bad condition. The price hike will continuously will be in rise. You can't able to stop it. Because day by day, your money reserve is getting completely demolished. Because the act monetization and because the act demonetizations, as we do put it in server, you know what the result is coming out? You did left nothing in your pocket. So, if any bank, whatever is happening inside the Sensex and Nasdaq and wherever, if they are showing you the data of reserves, because of the reserves is getting down or increasing, you may get the result of good. If Sensex is getting down, it means the Reserve Bank of India's reserve is getting low. Now it's a duty of Reserve Bank of India to purchase and to fulfill those all things. In that scenario, if suppose he needs to buy the sugar stock to supply to the government, and to let the supply inside the market, without getting the permission of Reserve Bank of India, the Sharad Pawar's company and other sugar mills are not able to issue the sugar inside the market. Now, this is the responsibility of sugar mills to notify their stock to Reserve Bank of India, and Reserve Bank of India will ask to those companies to issue the money. But how and why? They will use the channels like government agencies, like private marketing, like in Hindustan Lever. You know, Hindustan Lever company is a government India's company. You know, you don't know.
It's central government's company, Hindustan Lever. Now it's a Hindustan Unilever, Hindustan Universal. Yes. अब क्या समझाऊं मैं आप लोगों को? Uni is a universal. World's among the top most company to supply the necessary thing. Yes, it's a government agency, Hindustan Lever. Not like in a Procter and Gamble. Procter and Gamble is a United States of America's agency. Now the Reserve Bank of India will allow to Hindustan Lever Company to buy these all sugars and all products was manufactured by these companies, and they will issue it to their company, and they will sell it to in the market. But if they are getting those all things with a price, because of price hike in a very expensive mode, then you will receive it in expensive mode. This is the route from where these all price channel will maintain. भारत के अंदर जितनी प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी है ना इन इंडिया, whatever the product marketing companies are, that is totally belongs to Reserve Bank of India. Yes, Hindustan Lever is a company of Reserve Bank of India, sir. Are you crazy? Like HPCL, Hindustan Petroleum Corporation, like Indian Oil, but like in a Reliance, like in a other Jewish parts, Tata Group, they wants to be in fight with us. Oh, come on, yeah, now I'm going to abuse you. Go and check it. Reliance is also a company of Reserve Bank of India, यार. क्या बात कर रहा है अंबानी? Mukesh Ambani is a servant. Yes. None things can be out without the permission of Reserve Bank of India. Each and every company, marketing company, who's in a PDS system, yes, product distribution system, belongs to Reserve Bank of India. Yes. वो अलग बात है, if a मूंगफली seller is selling a मूंगफली inside the market, but who is sending these all मूंगफलीs in the market? Maybe possible they are getting direct from the farmer. So that is not the thing. Tata Group? It's not Tata Group. Tata becomes Tata here in India. Yes, it's a Reserve Bank of India's company. Ratan Tata is a servant, yaar. None company. Like what Mr. Modi was in mood. He wants to open a company via startup and to give the fund to government of India. Come on, yaar, go and do such your chamber inside the Tihar jail. So these all companies are responsible to buy the products was inside the production houses in stocks. This is a duty of Reserve Bank of India, and this is the channel. Very simple, like news channels. Would you like to ask to Mr. Prabhu Chawla? May I ask you, Mr. Chawla, is India Today is your channel? None news channel belongs outside of Reserve Bank of India. They are responsible. And for a kind information, Reserve Banks belong to Rothschild. You know who is Rothschild? That is me, sir. You can check anytime, sir, Raj. It's on my thumb. कौन है यार ये लोग? What you did, Mr. Shaktikant Das, in demonetization? What you did, Mr. Raghuram Rajan? What you did, Mr. Urjit Patel? Oh, leave it them, yeah. Those are the politicians. I don't care.
आई डोंट केयर। क्या बोलूं यार मैं, राष्ट्रीय चिन्ह रच, रॉथचाइल्ड इज अ कोड। किसी को कोई ईसाई नहीं है रॉथचाइल्ड बोल दिया तो। रच सी है। क्या समझाऊं शक्तिकांत दास जी मैं आप सबको, कैसे मेंटेन करोगे? मैं तो बैठ के आराम से देख रहा हूं। ठीक है, देखते हैं कब तक नहीं आते शक्तिकांत दास जी। फिर मैं गाना गाऊंगा, आपको देखना है। आना ही पड़ा सजना जाले में नोटों की लगी। लग गई भैया, नोट की लग चुकी है, समझ में आ गई। मैं बता रहा हूं ना, I'm completely now the situation is wait and watch. Yes, बैठो और आराम से देखते रहो। सेम आई एम डूइंग है। देखते हैं 4% बढ़ा ना रेपो रेट, अभी देखो तो सही कितना मजा आएगा। अभी मैं सोच रहा था रूबल के बारे में। रिसेंटली आई वाज इन टॉक विद मिस्टर Sergei Lavrov, a foreign minister of Russian Federation. Actually, I was in mood to either I buy ruble or sell ruble. If I buy ruble, means I will buy Russian gold from the World Bank. Entire, comes near to 8 trillions. I'm in mood to buy the entire Russian ruble from the World Bank. Let's see. Or I will sell entire Russian ruble was in my wallet, and I will borrow the gold. Let's see. I'm waiting the answer. I'm waiting the answer of Russian Federation now, and from you also, Mr. Shaktikant Das. Don't worry, I'm not in hurry. कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी यारो जब जीना है परसों। ठीक है, डोंट वरी सर, do in practice and do the hard work. I will see. Now, how can you buy the products for these all companies? Don't worry, sir. I'm देखते हैं शक्तिकांत दास जी, कोई बात नहीं। देखो, कहते हैं जिसको कोई नहीं समझाता ना, शक्तिकांत दास जी उसे वक्त समझा देता है। आप सबको भी वक्त समझाएगा, मैं नहीं समझाऊंगा। मैं तो अपनी बात कह के कंटिन्यूसली अपनी स्टडी और अपनी रिपोर्ट्स बनाता जा रहा हूं। समझ में आई? मेरा कोई बाप नहीं है, साफ सीधी बात है। मैं सबका बाप हूं। ये समय बताएगा आपको, ये समय बताएगा आपको। ठीक है, इतनी समझ मैं भी रखता हूं सर, कॉमन सेंस है। ठीक है शक्तिकांत दास जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख लेना। जिसे कोई नहीं समझाता उसे वक्त समझाता है। थैंक यू वेरी मच।